Hi friends, how are you all? I hope you all are fine. I am Pooja and I welcome you all to Bright Learners. So, we are doing Geography chapter number 2, that is globe, latitudes and longitude. So, this is the third part of this chapter and we have already finished the two parts of this chapter. So today we are going to start from what are longitudes. Last time we have read about heat zones of the earth. So today we will read about longitudes. So let's see what is longitudes. To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. So last time we have read like this, no? This is earth. This is North Pole. This is South Pole. So last time we have read only about these parallel latitudes. See, this parallel latitude. This is equator. These are latitudes. So to know the fixed position, only latitudes are only not required. More than this also required to know the fixed position of a place. So you can see, for example, you can take one example like the Tonga Island in Pacific Ocean and Mauritius Island in Indian Ocean are situated on the same latitude, that is 20 degrees south. So think, this is, here it is Tonga Island, okay, in 20 degree, and this Mauritius Island also same latitude, both are in 20 degree south. So here it is difficult for us to understand like how far it is from each other and which place is situated in east and which place is situated in west. Okay. So now in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole. So we have to know how much they are far from each other. So think this is a reference point from north to south, North Pole to south. Think this is Tonga Island and this is Mauritius Island and this is 20 degrees south. So in order to know this, it is in west or it is in west, how much is difference between that, we need longitudes. So this line of reference are called as meridians of longitude. So we have made one line, no, that is from North Pole to South Pole. This is called meridians of longitudes. These all are called meridians of longitude. Okay, fine. You understood all? Okay. So let us go to next page. These are, and the distance between them are measured in degree of latitude. So in between one from North Pole to South Pole in meridians, there is a difference in between them, and these are measured in degree. These are measured in degree. Okay. In further, this degrees are divided into minutes. So this suppose this is 1 degree, it is divided into 1 minute. Okay. Then this 1 minute into 60 seconds. 60 seconds. Okay. And they are semicircle and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes 0 at the pole where all the meridians meet. So see here, this is North Pole, this is South Pole, and these all are meridians. Okay. And this all meet here until it becomes 0. And see, this part will be more distance, then here a little less, here a little less, and in this pole it will become 0 and all meridians will meet here. Okay, until they meet and become 0. Okay, and same in South Pole also, until they meet to become 0. Unlike parallels of latitude, all meridians are of equal length. Okay, so these all meridians, they are equal length. Okay, this all meridians are equal length. All are same length. But in latitude you can see, suppose in the case of latitude, this is 80 degree north, this is small. See, this measurement is small. Then 60 degree little bigger than this. Then 40 little bigger. This 20 little bigger. Equator, then this 20 little bigger. Then here in north pole, in poles it is getting smaller.
in northern pole and in southern pole it's getting smaller. Okay, but in longitude the length is same. Okay, in meridians are same. Thus, it was difficult to number the meridians. Hence, all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich. तो it became difficult to number the meridians. तो ये difficult हो गया meridians को count करने के लिए. ये meridians को count करने के लिए difficult हो गया. तो सब जो countries है उन्होंने decide किया कि हम एक common margin रखते हैं. हम कॉमन मार्जिन रखते हैं और वो कॉमन मार्जिन क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीनविच. ओके, एंड वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड. तो जहाँ ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड वहीं से कॉमन लाइन जाता है. द मेरिडियन इज कॉल्ड एज, तो वो लाइन का क्या बोलते हैं कॉमन लाइन को, प्राइम मेरिडियन. देखिए ये है प्राइम मेरिडियन, ये कॉमन लाइन है. ओके, सो दिस इज कॉमन लाइन एंड इज कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन. So its value is 0 longitude and from it we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward. तो ये है मिडल में 0, इसका जो मिडल में 0 और ये जो ईस्ट साइड में इसको हम कहते हैं 180 डिग्री एंड वेस्ट साइड में 180 डिग्री. ओके, नाउ द प्राइम मेरिडियन and 180 degree meridian divides the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. तो जो equal part प्राइम मेरिडियन equal parts में divide कर रहा है अर्थ को. so this side we called eastern hemisphere and this side we call western hemisphere. Okay, therefore the longitude of the place is followed by the letter E for east and W for west. तो east के लिए हम क्या लेटर देंगे, E, and west के लिए हम देंगे W. Okay, it is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. Okay, both are in same line, east also and west also are in same line. Now look at the grid of the parallels of the latitude and meridians of longitude on the globe. 2.6. You can see here the grids. These are longitude and these are latitude. These are, you can see the grids. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. तो हमें अगर longitude भी पता है और latitude भी पता है तो हम कोई भी place को easily locate कर सकते हैं हम globe में. फॉर एग्जाम्पल आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल धुबरी इन आसाम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. ओके, so find the point where these two lines cut each other. That point will be the location of Dhubri. So in home you can do this example. So I will not teach this one. You can locate this. You take one page and this I will read for you. To understand this clearly, draw equidistant vertical and horizontal lines on paper, like these vertical lines. Like in figure 2.7 you can see like vertical lines and horizontal line you have to draw in paper. And level vertical rows with number and horizontal rows with letter. Okay, तो vertical rows को हमको number देना है, ये 1 2 जैसे दिया हुआ है, और horizontal line को A B C D E जैसे देना है. Let vertical line represent east longitude and horizontal lines as north latitude. तो vertical है east और horizontal है north latitude. Okay, now you will see that circle A is located on B degree north latitude and 1 degree east latitude. Find out the location of other circle. So you can do it easily in home. So now we are going to the next topic. So here you can see this is a figure of time zones of the world. In this, time zone is given for every country. Here you can see the middle one, Greenwich line. This one is Greenwich line.
and these are the meridians. According to that, time is divided for each country. Okay, next is longitude and time. Longitude and time, the best means of measuring time is by movement of the earth. तो बेस्ट मीन्स क्या है टाइम मेजर करने का, वो है मूवमेंट ऑफ अर्थ। जैसे जैसे अर्थ मूवमेंट होगा वैसे वैसे हम टाइम का पता लगा सकते हैं। और द मून एंड द प्लैनेट्स, तो अर्थ के साथ साथ मून भी है और प्लैनेट्स भी है, उनका मूवमेंट से हम टाइम का पता लगा सकते हैं। द सन रेगुलरली राइज एंड सेट्स एवरी डे, तो सन क्या है, रेगुलरली उगता है और डूबता है डेली। एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो सन के with the help of sun we can understand the timing. Local times can be reckoned by the shadow cast by the sun, तो शैडो एक फॉर्म होता है ना, उससे हम लोकल टाइम का पता लगा सकते हैं। विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट, तो जो नून टाइम में जो सनराइज होता है ना वो बहुत शॉर्टेज होता है, और जो सनसेट के टाइम और सनराइज के टाइम बहुत वो लॉन्ग होता है। आप ये घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप सुबह जब सनराइज होता है ना, तो आप उस सन के वक्त खड़े होकर देखिए, तो आपका जो शेडो है बहुत लंबा दिखेगा। शाम को भी इसी तरीके से वो लंबा दिखता है, और जो आफ्टरनून में अपना शेडो देखिएगा वो बहुत स्मॉल होता है। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. So ये है prime meridian, okay, ये है अर्थ। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, तो यहाँ पे ये सन हाईएस्ट पॉइंट में है, तो ये जो ये इसके आसपास में जितने कंट्री है ग्रीनविच के, वहाँ पे मिड डे नून होता है। ओके, क्लियर। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि अर्थ कैसे रोटेट होता है, वेस्ट टू ईस्ट। ओके, ये है वेस्ट, ये ईस्ट की ओर, ऐसे रोटेट होता है अर्थ, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट। ओके, so those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. तो फिगर 2 में देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। ये है ग्रीनविच टाइम स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो ये पार्ट जो है, ये साइड ये है ईस्ट और ये जो है ये वेस्ट। सो सन तो वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट होता है, तो जो ईस्ट का पार्ट है ना ये हमेशा अहेड होता है, अहेड ऑफ 1 आवर। देखिए यहाँ बोला गया जो ये ईस्ट की तरफ है ना, जो ईस्ट की तरफ जितनी कंट्रीज है वो अहेड होते हैं, अहेड, दिस विल बी अहेड। और जो वेस्ट की तरफ है ना ये वेस्ट, इट विल बी बिहाइंड, इट विल बी बिहाइंड, दिस कंट्रीज विल बी बिहाइंड, दिस कंट्रीज विल बी अहेड, ईस्ट विल बी अहेड एंड वेस्ट विल बी behind. Okay, so the rate of difference can be calculated as follows. The earth rotates 360 degree in about 24 hours. तो इन 24 आवर्स में अर्थ कितना डिग्री रोटेट होता है, 360 डिग्री, विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट। उसका मतलब क्या है, 15 डिग्री में 1 आवर, ओके, 15 डिग्री में 1 आवर और 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 1 डिग्री कितना हुआ है, 4 मिनट। फाइन, अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, तो 1 डिग्री में 4 मिनट वो अहेड होंगे। Thus when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 4 is equal to 60 minutes. So it will be, जब 15 डिग्री ईस्ट में होगा ग्रीनविच के, तो ये जो ईस्ट की तरफ ये कितना मिनट, 60 मिनट्स अहेड होगा, 60 मिनट्स 1 आवर अहेड होगा, दैट इज़ 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। तो ईस्ट के जितने कंट्रीज है वो 1 आवर अहेड होंगे, ये आप याद रख लीजिए।
विच मीन्स 1 PM। तो ये सपोज यहाँ पे 12 तो यहाँ पे ये होगा ईस्ट की ओर होगा 1 PM होगा, बिकॉज इट इज़ वन आवर अहेड। एंड यहाँ पे क्या होगा 11 AM, जो 1 आवर बिहाइंड वेस्ट की ओर। बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच टाइम इट विल बी behind Greenwich by 1 hour. Okay, so it will be behind 1 hour, that is it will be 11 AM. so Greenwich के इधर होगा 1 PM और ये जो मिडल है ये होगा 12 PM और ये जो साइड होगा वो होगा 11 AM. This is 1 hour ahead, this is west is 1 hour behind. Okay, clear? I hope you all understood. Then at any place a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky. तो आप अगर किसी भी कंट्री में हो ना, तो जो अगर उस टाइम सन है वो एकदम हाईएस्ट पॉइंट में है, तो आपको ये जान सकते हैं कि उस टाइम क्या हो रहा है वहाँ पे। उस टाइम 12 o'clock हो रहा है, इट मीन्स इट इज़ 12 o'clock. सो यू कैन एडजस्ट योर वॉच अकॉर्डिंगली. सो that is 12 o'clock. When the sun is when it is midday, the time shown by the sun, a watch will give the local time for that place. You can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time. Okay, so why do we have standard time? तो हमारे पास standard time क्यों है? The local time of a place which are on different meridians are bound to this we will read next class. This we will read on next class because it's going to be more than 10 minutes. So in next class we will be covering this topic, why do we have standard time. So thank you all and I hope you all understood. If any doubts you ask me in comment section, and please do subscribe to my channel.